Hello students, you have given maximum of your subjects examination for the ICSE 2025 and now you are into the computer applications paper which will be beginning after a few days. The computer application paper is one of the subjects in which you can get full marks, 100 out of 100. And in this way, and for achieving this landmark, Brahmastra, a solution which will lead you to achieving 100% marks in your computer applications paper. So I'm Dr. Santosh, a Guinness World Record holder for the longest computer programming class in which I taught Java to ICSE computer students. This session is basically to lead you to achieving your best for the theory part. And there will be one more session in which I'll be covering the programming section. Because if you are getting full marks in the theory part, there is 100% guarantee that you will be getting full marks in the programming section as well. So watch this session with full energy, full concentration, and get 100% marks in the theory part as well. So that the 60 marks which you are going to get in the programming, that will add it to 100 marks, right? So watch this video, follow it properly, and yes, remember all the terminologies because that will help you get the full marks. So that is my assurance कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से and you are getting into it, your theory portion, there will be no question outside this. That is a assurance to you all. Okay, so let's begin the session. Try to understand it. Any doubts, any queries, you can message me in the comment box. Fine? Yeah. So Java, when we talk about the basic thing, first we need to understand what is POP and what is OOP. POP hota hai procedure oriented programming, in which more stress is laid on function rather than data. Certain drawbacks of POP is that data values are global to all the functions. You may require to make necessary changes in the functions due to change in the data values. It is not suitable to solve complex programs. Certain characteristics of POP, emphasis is laid on functions. Functions share global data. Data values can keep floating from one function to another, and it uses top-down approach of programming. When we talk about object-oriented programming is a modular approach. Modular means the program is divided into modules, which allows the data to be applied within the stipulated program area. It also provides a reusability feature to develop productivity logic. Which features OOPK? It gives stress on data rather than functions. It makes the program simple by dividing it into a number of objects. So objects can be used as a bridge to have data flow from one function to another, and data can be easily modified without any change in the function. Next, you need to understand the elements or the principles of OOP. Encapsulation, it is the binding up or the wrapping up of data and functions together into a single unit called class. Remember, two things: binding of data and functions, single unit called class. So when the evaluation will be done, you have to mention these 2 points. Abstraction, act of representing only essential features without including its background details. For all these, no, you also need, there are picture-based questions. So need to understand, for example, there is a burger given. Now the burger encapsulation is done. It is encapsulation. You are shown with a bike or a motorbike or a car. You need to know how it works. You don't need to know the internal working. It is example of abstraction. Object, unique entity with some characteristics and behaviors. Now, what is a class? A class is a set of objects which share some common characteristics and behaviors. Attribute, the characteristics which make every object having its identity, make them distinguished. That's the attribute. Polymorphism, the ability of a method to behave in more than one form is called polymorphism. Function overloading uses polymorphism. Inheritance, ability of a class to opt the properties from base on other class is known as inheritance. Inheritance के लिए base class, derived class. And the keyword used to link the base class to derived class is extends. Certain advantages of OOP, we can extend the use of existing class through inheritance.
Using the concept of data hiding, we can generate secure programs. We can create different modules in our project through objects. Multiple instances can be generated to coexist without any interference. It is highly beneficial to solve complex problems. It is easy to modify it and maintain software complexity. Data binding क्या होता है? Data binding is the process to link the function call with function signature. When we call the functions, the function call statement, function prototype, function signature से link होता है. That is data binding. Data hiding is a concept in which data को हम अपने premises तक maintain करते हैं. There are three types of programs: standalone applications, internet applets, servlets. We can go with basic 2 as well, right? Standalone application जो programs हम लोग अपने कंप्यूटर से बनाते हैं basic working के लिए, basic purposes के लिए, that is standalone applications. और applets क्या होते हैं? Those programs which need a web browser for their execution, right? Web browser जिसमें चाहिए होता है, that's the internet applet. ऐसे applets जिनको की कोई web server चाहिए होता है, they are servers, servlets. ठीक है? तो basically we will talk about 2: standalone applications or internet applets. Then we talk about Java bytecode and Java virtual machine. Java bytecode क्या होता है? Java bytecode is a intermediate language. Normal programs में जब compilation होता है, normal programming languages में, the source code is directly converted to the machine code. लेकिन Java के केस में क्या होता है? There is an intermediate language, intermediate part, that is Java bytecode. The source code is first converted to Java bytecode, and then we require the interpreter. और interpreter कौन है Java का? That is Java virtual machine. The Java virtual machine converts the Java bytecode to the machine code. Next हम बात करते हैं java.lang. Java.lang क्या है? It's a default class containing all the basic string, character, maths, integer, threads, and all these basic functions. They are present within the Java.lang. जो भी string functions हम लोग पढ़े हैं ना, all the information about the string functions, the math functions, they are present in the package java.lang. Basic features of Java. Java के कुछ basic features like write once, run anywhere. मतलब एक बार जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है, that program can be compiled and it can be executed at any machine. फिर से compile करने की requirement नहीं होती है. That is write once, run anywhere. Lightweight code. It offers many security features to make the program safe and secure. It has built-in graphics support. There is support for multimedia. It is platform independent, means it can work on any platforms. Then it is open product, that it is freely available to all. ठीक है? Certain terms, keywords. Keywords are the reserved words which convey a special meaning to a language compiler. Specific words which convey a special meaning to the Java program. Comments. Comments, non-executable statements. They are just used to give certain instructions, certain informations to the user. Tokens are the smallest individual characters used in Java program. It is a fundamental unit of program. It consists of keywords, identifiers, operators, punctuators, separators. Literals, they are the constants, fixed variables which not change the values during execution. Operators are basic symbols which are used to perform certain specific tasks. Data types, they are the entities that tell the computer what type of variables can be held in that. Operands are the data items on which the operation takes place. The different types of data types are primitive data types and non-primitive data types. Primitive data types which do not depend on any other data types. दूसरे के ऊपर depend नहीं करता, like int, float, byte, long, double. They are all primitive data types. And non-primitive data types, non-primitive data types, they depend on the primitive data types. Non-primitive data types जैसे कि array, class, interface, they are all non-primitive data types. Variable is a named memory location in which we can store our desired data. Identifiers, literals are constant, identifiers are variables. It is a series of characters consisting of letters, digits, underscore, dollar sign. It cannot contain any other special character except underscore and dollar sign. Type conversion दो तरह का होता है, implicit data type, implicit and explicit. Implicit का मतलब क्या हुआ? It occurs when holds different types of data, means automatic conversion जब होता है, that is. And again, explicit data, explicit conversion, forced conversion, right? For example, अगर एक int और float को हम add करते हैं, so automatically the int data gets converted to the float. That is the implicit one. Explicit, if I forcefully convert, I add an int before a float value, then it will be forcefully converted to integer. So that is the explicit conversion, right? The hierarchy: byte, char, short, int, long, float and then double. ठीक है? जो हायरार्की होता है मतलब कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है तो किसको वो प्रायोरिटी लेगा.
ठीक है, तो जो हायर लेवल में होगा उसको प्रायोरिटी लेगा। Students, remember you need to go through, listen to the entire thing, make points of it, और इसको अच्छे से याद कर लो, because theory में इससे बाहर से questions नहीं आएगा। Then again, an important thing, that is the increment decrement. Increment decrement operators, they are used to add something. Increment increases the value of one by one, and decrement decreases the value by one, value of the operand by one. दो तरह से होते हैं, postfix and prefix. Postfix changes the value after the use. Prefix, first it changes the value, then it operates. Like if I say a equal to 5, and then I say b equal to plus a into 4. प्लस ए का वैल्यू 5 से हो गया 6 प्लस 4 इट इज 10। लेकिन अगर कहता ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए प्लस प्लस 4, ए प्लस प्लस का वैल्यू था यहाँ पे, तो इट विल रिमेन 5। आगे चल के कहीं ए यूज हुआ तो वहां पे इट विल बिकम 6। ओके, then certain math functions, again we have different math functions like math.sqrt, it finds the square root, return type is double. Math.min returns the smaller of two numbers. Math.max returns the bigger of the two numbers. Math.power returns the value of a raised to the power b. Return type again double. Math.log returns the logarithmic value. Return type is double. Math.abs it returns the absolute value. मतलब अंदर किसी भी साइन में रहे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, the return type will be a positive value. Right? If I say math.abs 23, it will be 23. Math.abs minus 23, it will be 23. अगर मैं कहता हूं math.abs minus 23.5, the result will be 23.5. और अगर कहते हैं math.abs 23.4, it will be 23.4. Math.float returns the number of the previous lower integer value. Math.float, अगर मैं कहता हूं math.float 3.4, रिजल्ट क्या होगा 3.0। लेकिन यही अगर होता है math.seal 3.4, रिटर्न होगा 4.0। तो फ्लोर नीचे, सीलिंग द हायर वैल्यू, ठीक है। सो math.floor returns the value to the lowest value, lower integer. Math.seal returns to the higher value, ठीक है। Then once again I remind, increment decrement is very important. You can go through the videos of the increment decrementer operator also, and I'll be sharing the link as well. You can go through that. Import क्या होता है? Import is a predefined keyword by which we can include the predefined classes or packages. It can be called. Exception क्या होता है? Exceptions are those unwanted situations which affect the normal execution of the program. ठीक है, प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशंस को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए देयर आर डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑपरेशंस, डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर्स, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर्स जो कि उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन को हम लोग एरर की तरह भी ट्रीट करते हैं। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? अगर प्रोग्राम के सिंटैक्स में कहीं पे मिस्टेक है, जैसे मिसिंग सेमीकोलन हुआ, या फिर अगर हुआ कि मिसिंग ऑफ ब्रैकेट्स, ये सारे जो है दे आर सिंटैक्स एरर्स। तो अगर सिंटैक्स एरर होगा तो सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर डिटेक्ट करेगा और प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट रन टाइम एरर, रन टाइम एरर जो होता है उसको कंपाइलर तो इग्नोर कर देता है, कंपाइलर को नहीं पता चलता है। रन टाइम एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि कुछ एरर्स हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय अकर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कि a अपॉन b, कंपाइलर को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन b का वैल्यू आ गया 0, b का वैल्यू 0 अगर आ गया तो इट बिकम्स अ अनडिविजिबल वैल्यू। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उस समय वो एरर डिटेक्ट होगा, एंड देन इट इज अ रन टाइम एरर, ठीक है। एंड देन लॉजिकल एरर, कंपाइल, तो रन टाइम एरर को कंपाइलर डिटेक्ट कर नहीं करेगा, बट इंटरप्रेटर डिटेक्ट करेगा एंड प्रोग्राम विल स्टॉप वर्किंग देयर। रन टाइम एरर इंटरप्रेटर रिपोर्ट कर रहा है। लॉजिकल एरर क्या होता है? इसको ना तो कंपाइलर डिटेक्ट करेगा ना ही इंटरप्रेटर डिटेक्ट करेगा। इसको क्या होगा? प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, लेकिन आउटपुट या रिजल्ट जो आएगा मेरा वो गलत आएगा। दैट इज ड्यू इन द लॉजिकल एरर। So you can be given कि अगर errors दिए हुए, identify the type of error, whether it is a syntax error, runtime error or logical error, so that you can do it.
So this is again packages. Packages क्या होते हैं? Packages are a group of related classes and interfaces and provides a convenient mechanism for managing a large set of class and interface. Then a very important thing, that is functions or methods. Functions क्या होते हैं? It is a part of a program which is used to perform specific tasks. Program को कई सारे parts में divide कर देते हैं. That is a function. Methods is a specific implementation of operation of some class. Function में function prototype काफी important होता है. Function prototype क्या होता है? It is the first line of the function which identifies you or which contains the function name, the access specifier, the function parameters, all these information जो होते हैं वो function prototype में होता है. ठीक है? Then the function signature, it contains the variable name. Does not contain the variable name, it contains the function type. Data type जो होता है वो specify रहता है हमारे पास function signature में. तो function prototype contains the first line जिसमें कि function name होता है, variable name होता है, variable type होता है, return type होता है. But function signature में return type, function name, and then only the type of variables. Pure function which returns value and does not change the state. Impure function which may return the value but changes the state. उसको actual parameters or formal parameters मैंने कहा. Formal parameters are specified in the function prototype. Function definition, actual parameters are defined in the function call statement. Function formal parameter contains the variable names and actual parameter contains the actual values. Main function is very important because main function ही वो function होता है जो सारे functions को call करता है. ठीक है? सारे functions को call करना, class का object बनाना, ये सारा काम होता है main function का. Then a very important thing, pass by value and pass by reference. Pass by value क्या होता है? Pass by value is the process of passing a copy of the actual arguments to the formal parameters. मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट्स का एक कॉपी पास फॉर्म जो हम पास बाय वैल्यू में पास करते हैं, तो जो चेंजेस होंगे वो फॉर्मल पैरामीटर में होंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट्स में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. इसका एक सिंपल एग्जांपल कह सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क का जो कॉपी था वो किसी और को आपने दिया. अब वहां पे उसने क्या किया? केवल की नेम चेंज कर दिया, तो कंटेंट वही रह गया, नेम चेंज हुआ. दैट इज अ पास बाय वैल्यू. पास बाय रेफरेंस, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द रेफरेंस, that is the address of the actual arguments to the formal parameter. तो इसमें जो changes होगा that will be reflected in the actual arguments as well. Pass by value and pass by reference काफी एग्जाम इंपॉर्टेंट है. You could go through the video of functions, उसमें pass by value, pass by reference के examples भी मिलेंगे. Pass by value और pass by reference से एक question आएगा ही आएगा, whether it is definition, whether it is difference, whether it is example, ये questions आएंगे ही आएंगे, right? Then function overloading. Function overloading क्या होता है? Function overloading is the concept in which in a program there can be more than one functions using the same function name, but the set of parameters will be different. Function name same होगा, parameter जो उसका set of parameters होगा वो different होगा. Function overloading भी important है सेक्शन ए में definitions के point of view से, और एक programming भी function overloading से रहेगा, right? So that we will discuss again when we discuss the programming part. So that is there. Then again when we talk about certain statements, that function overloading. So function overloading is implements polymorphism. ठीक है? Function overloading implements polymorphism. Students, I will also request you that you must listen to it, plus these points which I'm making, you can make a note so that you can again do the revision, final revision. I'll be putting one more video for the theory in which I'll be putting up certain points, few points for the last minute revision. उसको एग्जाम से के लिए निकलने से पहले भी एक बार उस वीडियो को देख के जाना, because that will help you, right? And programming. So 2 more videos I'll be putting up. Constructor. Constructor क्या होता है? Constructor is a special function which has the name same as the class name. जो क्लास का नाम होता है वही फंक्शन का भी नाम होता है. कुछ फीचर्स कंस्ट्रक्टर के, class name is same as the class name, the function name is same as the class name. It does not have a return type, not even void. It is used to initialize data members of an object with legal initial values.
इट इज कॉल्ड और इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तभी इसका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली एंड बाय डिफॉल्ट द कंस्ट्रक्टर गेट्स एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक. नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कोई पैरामीटर नहीं होते हैं. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं. देयर कैन आल्सो बी ए कॉपी कंस्ट्रक्टर, जहां पे कंस्ट्रक्टर के वैल्यूज को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करते हैं. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द क्लास इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. Destructor is also a term, but it's not so much important. But still, destructor, just like constructor, is used to assign some values. Destructor is used to revoke the values which have been assigned to the variables. That is destructor. Okay. Default constructor is invoked by default in the system. Copy constructor initializes instant variables by copying the initial values of the instant variables from another object. Parameterized constructor, जैसा मैंने बताया कि उसमें parameters होते हैं. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइक द फर्स्ट वन बीइंग बेस क्लास. बेस क्लास क्या होता है? इट इज अ क्लास व्हिच इज इनहेरिटेड बाय अदर क्लास. ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस में यूज होता है या लूप में यूज होता है, व्हिच इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. बफर इज अ हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज, आल्सो इट इज नोन एज कैश मेमोरी. Character is a token which is a distinguished mark or symbol, alphabets, character, lowercase, uppercase. Compiler, which is used to convert the high level language to machine level language. Compound statement, set of multiple statements written within the brackets. Block of statement भी कहते हैं. Continuous statement loops में use होता है, in which एक condition को ignore करके and it moves to the next iteration. Debugging is the process of correcting errors which occurs during the compilation of the program. Dynamic binding is the process of linking the function call with the function signature during the execution. Instant variables, a variable defined within the class or object is known as instant variable. Scope of variable, the range within which the variable is accessible. Reusability, the process of adding some additional features to a class, that is reusability. Message is a way of sending or receiving information to or from the objects. Object factory, class को हम object factory बोलते हैं because an object is created within the class. Many objects can be created within the class. That's why a class is known as object factory. Final keyword is used to make a variable as a constant. Dot operator is used to create instances of the class members. Block, group of statements. Static is a keyword which is the variable declaration to make it a class variable. New is a keyword which allocates memory class के लिए या फिर array के लिए. Type promotion, conversion of all operands up to all the type of the largest operands. Integral promotion, conversion of shorter integral types को उसके higher integral type में convert करना. Shorthand operator, a plus equal to b. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, अगर मान लो a प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे? a इक्वल टू a प्लस अगेन द एंटायर थिंग इन द ब्रैकेट. दिस इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू रेफर टू द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक्सेसर मेथड, फॉर्मल पैरामीटर को एक्सेसर पैरामीटर हम लोग कहते हैं. म्यूटेटर मेथड, pure method is known as accessor method, impure method is known as mutator method. Exception handling is a way of handling exceptions in a program. Try and catch, try is used to check for the block which is to be checked, और catch क्या करता है? अलग अलग exception handlers होते हैं catch के अंदर. So try contains the set of statements which will be checked, और कैच क्या होता है? कैच में अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलर्स होते हैं जो कि उसको कैच करते हैं, जो उसको चेक करते हैं. सो ट्राई कैच इज अ मेथड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. सुपर इज अ कीवर्ड फॉर कॉलिंग द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. थ्रोज इज अ कीवर्ड टू कॉल द इन्फॉर्म द एरर. ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, अगेन आई हैव टोल्ड सिंटैक्स एरर. Dangling else problem, nested if else statement introduces source of potential ambiguity. जहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इफ इज मोर देन एल्स, ऐसे सिचुएशन को हम डैंगलिंग एल्स कहते हैं. फॉल थ्रू सिचुएशन, अगर किसी भी स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट मिसिंग है तो अगला वाला केस भी साथ में एग्जीक्यूट होगा. सच सिचुएशन इज नोन एज फॉल थ्रू सिचुएशन. ग्लोबल वेरिएबल, अ क्लास वेरिएबल व्हिच इज अवेलेबल टू द एंटायर क्लास, उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. यू कैन आल्सो गेट दैट. एक मेथड दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ग्लोबल वेरिएबल, द क्लास वेरिएबल, द लोकल वेरिएबल. तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है. पैरामीटराइज्ड वेरिएबल, दैट इज द पैरामीटर. स्कोप, रीजन, जिस एरिया में वो वेरिएबल या सोर्स एक्सेसिबल है. Selection statement, statement that allows to choose a set of instruction for executing. So decision making statements, they are also called selection statements. Statement, instruction given to the computer, that is a statement. Infinite loop, जो हमेशा चलते जाता है, जो कभी end नहीं करता है. Null loop, which
executes but there is no statement within the loop. Iteration, repetition, कोई भी statement जो repetition के लिए use होता है. Jump statement जो unconditionally transfer program within a function, break and continue. Looping statement, iteration statement को बोलते हैं. Nested loop, loop के अंदर अगर loop है तो that is a nested loop. Piece of code, the program parts which is a particular piece of code जिसको हम बोलते हैं piece of code. Data members that contain information necessary to represent the class. Sequential construct statement जो कि sequentially one after another execute करते हैं. Non-static variables, it can be accessed in static variables. ठीक है. Continue statement मैंने बताया. Library class, they are predefined classes of Java which get included in application program itself. Standard Java classes या built-in classes कहते हैं. ये सारे जो definitions हैं, they are very important and you all must remember it before going for the examination. Byte stream, bytes जो transfer होते हैं, ठीक है? They are built up data type, provide the functionality of reading and writing bytes, ठीक है? Character stream जो होते हैं, characters जाते हैं उसमें. Reader class is a character stream class used to read characters. Interface, set of variables and methods, just like a class that's the interface. Abstract methods, all methods in an interface are abstract, means their body needs to be defined in a class that implements the interface. Subscripts क्या होते हैं? They are the cell numbers of the array. A3, M4 जैसे मान लो यहाँ पे, तो 4 is the subscript and M is the subscripted variable. Buffer reader, buffer statement input and improves the performance. Buffer reader use होते हैं basically जहाँ पे कि the data items are accepted. Field is an individual data item or a record. Record is a set of related information. Binary file stores information in the form of bytes. जैसे जो Java byte code हमारा बनता है. Coercion, implicit data type conversion को हम लोग coercion या coercion भी कहते हैं. Parameter, the variable used with method signature, which received variable during function call. Arguments, they are the values which are passed to the method during its call for the other. Object source, the conversion of high-level language to machine-level language with the help of translators. Source code, it is an application program written high-level language, which is an input to a computer system. Then testing is the process of checking programs logic manually to ensure whether it contains an error. Testing और debugging. Testing क्या होता है? Check करते हैं कोई error तो नहीं हो. Debugging जो error है उसको हम लोग remove करते हैं. So and then multi-level inheritance and different types of inheritance are there. Certain reason-based question. Class को object factory क्यों बोलते हैं? Why is a class known as object factory? Because it contains all the statements needed to create an object. Object को instance of a class क्यों बोलते हैं? Because data members of a class are referred as instance variables and these variables are embedded automatically. That's why it is known as instance of a class. Class को user defined data type क्यों बोलते हैं? Because the output depends on the values given by the user. Objects encapsulate state and behavior. ठीक है? Objects क्या होते हैं? Like अगर हम बात करते हैं characteristics, different characteristics and behavior को object combine करते हैं. Java is a purely object-oriented programming language because the programs written in this language are closer to the objects जो कि affect करते हैं program को. ठीक है? Java is a case-sensitive language because it treats uppercase and lowercase differently. Java is an internet language because it concentrates on the real-world objects and is portable, which demand by the World Wide Web. Java को garbage collector क्यों कहते हैं? Because जैसा मैंने बताया था डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ना, अपने आप से अगर उसका वैल्यू का यूज नहीं हो रहा डेटा का, इट ऑटोमेटिकली गेट्स रिमूव, डीअलोकेट होता जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ गार्बेज कलेक्टर. Object state and behavior are two distinct things yet linked to one another because the state of an object control its behavior of an object जो कि उसके स्टेट को चेंज कर सकता है. That's why encapsulation is one of the major properties because encapsulation जो है ना, एनकैप्सुलेशन और ऑब्स्ट्रैक्शन इसलिए हम कहते हैं कि इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर वो रैप अप हो रहा है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, तो क्या हुआ, जो जरूरी चीज है वही दिखाई पड़ेगा, मतलब दैट इज एब्स्ट्रैक्शन. एनकैप्सुलेशन की वजह से ही एब्स्ट्रैक्शन होता है. Only a function that has access to the constructor can use the objects of this class because every time object is created, automatically वो constructor call हो जाता है. There can be many abstractions of an object. Yes, because abstraction of an object or an entity depends upon the application to which it is used, जहाँ पे use कर रहा है. Java is known as a platform because it is the environment जिसके ऊपर base सारी चीजें develop होती हैं. That's why it can be referred to as a platform. Classes are said to be associated of or a set of objects because classes are a group of objects जो कि similar properties show करते हैं. JVM is referred as a machine although it is a software. Being a software, it produces machine readable code from the byte code. Hence, it is known as machine.
डेटा टाइप्स, साइज एंड रेंज, ये टेबल याद कर लेना सबको ही, काफी यूज इसका है। जैसे मान लो अगर एक बता दिया कि एक इंटीजर है जिसमें कि 10 एलिमेंट्स हैं, पूछ लिया क्या हाउ मेनी बाइट्स विल बी नीडेड। अब एक इंटीजर का साइज क्या होता है 4 बाइट, उसमें 10 इंटीजर्स हैं, इट विल रिक्वायर 40 बाइट्स। अच्छा इसमें राइट, सो बिट्स एंड बाइट्स में यू मस्ट रिमेंबर 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, राइट। 4 items that are needed to define a class: public, access specifier, class, data term, class name, and then instant variable. 2 non-numeric primitive data type, char and string. Steps involved in debugging, error detection and error correction. ठीक है, accessor method को pure math function बोलते हैं, mutator method को impure function बोलते हैं। Difference between unary and binary operator. Unary operator में single operand, binary operator में 2 operands होते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉस्ट बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक एंड कंटिन्यू में डिफरेंस, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देता है, कंटिन्यू उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए रोकता है। एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप. Entry control loop, the condition is checked while coming into the loop. Exit control loop, the condition is checked while coming out of the loop. एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब भी लूप एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड मॉडुलस, डिवीजन का जो सिंबल होता है इट फाइंड्स द क्वोशिएंट, मॉडुलस का सिंबल फाइंड्स द रिमाइंडर। ठीक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च can be operated on any type of element on array, but binary search के लिए the data should be in sorted order. Static and non-static data members में difference will do, difference between length and length. Length, it finds the length of the array, finds the size of the array, how many elements are there. ये वाला length, second one, it finds the number of characters present in a string. Private and protected difference, difference between class and object. So already we have discussed these terms, we will go through it, right? And then you will be able to understand these differences and the terms. This chart for the string functions and the used, you need to remember the function name, the task performed, the return type, and then the example and the syntax you must, right? Length, find the number of characters present in the string. It counts from 1. Caret, find the character present at the specified index position. Index of finds the first occurrence, index position of the first occurrence of the character. Last index of finds the index position of the last occurrence. 2 uppercase converts to uppercase, 2 lowercase converts to lowercase. Equals checks whether the 2 strings are same or not. Equals ignore case, it ignores the cases. Replace the occurrences of one character with the another character. Concat combines 2 strings. Trim removes the blank space before or at the end of the string. Substring finds a part of a character string, right? Returns a part of a string. Compare to compares or finds the difference between the first, wherever is the first difference of the character, right? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 compare to, right? जहां पे पहला डिफरेंस है, राइट, जहां पे पहला डिफरेंस है वहां पे फर्स्ट कैरेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसके ASCII कोड का दैट इट फाइंड्स। ठीक है, दैट इट फाइंड्स। अब यहां पे मान लो कैट, स्ट्रिंग ए इक्वल टू कैट, CAT, स्ट्रिंग बी इक्वल टू बैट, ए डॉट कंपेयर टू बी। अब पहला ASCII कोड सी का 67 और बी का 66, 67 minus 66, it will result to 1. Starts with, checks whether the string starts with a given specified value or not. Ends with, checks whether the string ends with the given specified string or not. Return type boolean. So सारे string functions का performed क्या करता है वो, what is its return type, what is the syntax and the example. It will help you in program, it will help you in output based questions, it can help you in difference, whatever way. So string will be there, right? So this is about the theory part. I'll again be coming up with 2 more sessions. I'll be putting up 2 more videos. This one is for your entire theories. पूरे इसको 2-3 बार revise कर लोगे, 2-3 बार you go through these videos and it will help you to do your theory part. 1 last minute revision notes and 1 for programs. I'll be putting up the videos again, right? So all the best for your examination. Do well in the coming examination and again in the computer examination. All the best to all of you, and I want all students watching this video to get 100 marks in the computer paper, and I assure you that if you follow all the videos you will get 100 marks. All the best to all of you. Good luck.
Thank you.